and Rob, obviously you know from Genetics Australia, and Rob's got a message for you in like 50 seconds as we're having a struggle with our internet. Can you hear us better now? Yeah, of course, I can hear you better now. Okay, Rob. Yes. Appointing him as a... Yeah, so we've appointed this gentleman here. Yeah. As an ambassador for our... Dr. Muzammil. Dr. Muzammil is our ambassador for Genetics Australia product. And we're looking forward to sort of great cooperation in future. Yeah, no worries. Doc, he's the Bryan Dickson. He's like, we are in his herd, and he's got one of the top herd in Australia. Apparently, number 4 in BPI in Australia, but he's probably milking the highest number of cows in all that lot. So if you want to ask him any question, you have queries, or your farmers ask about Australian genetics, you can ask him, because he's probably one of the best men to ask this question. और इसी वजह से आज मैं ऑनलाइन भी ज़्यादा रहा हूँ कि जिन फार्मर का क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन फार्मर जिसके पास 900 काव है, आप पूछ सकते हैं लाइव. Thank you very much. First of all, I would like to thank all of the team. So my question to you is that many of the farmers in Pakistan, they made a query that the Australian animals, they are yielding about 6,000 liters milk a single lactation. So what's your take on it? The 6,000 litres would be the average. I don't think that would even be. I don't think that would be the average in Australia's lactation. Our profitability ranges from 6,000 to 8,500 litres per lactation. That's our bell curve. So if you have less than 6,500 lactation, it becomes harder to make money. And if you go over 8,000 to 8,500 litres, it becomes harder to make money. So that's why our lactation is lower. If we were paid differently, our cows are very capable of milking a lot more. So 10 years ago, our herd averaged 9,500 litres, but it's more profitable for us to average 8,500 litres. So my herd averages 8,500 litres. So it's all about trying to be profitable, really. We can't spend $2 and only get $1.80 back. It just doesn't make money. So that's why we don't feed to produce 10 or 11,000 litres average. So basically, डॉक्टर साहब आपके फार्मर को ये ब्रायन डिक्सन, हाँ जी, अगर मैं उर्दू में कर दूं या आप करेंगे? Please कर रहे हैं. हाँ जी, बेसिकली ब्रायन ये कह रहा है कि इसके फार्म की एवरेज जो है तकरीबन 8,500 है, मगर ये पेड डिफरेंटली होते हैं. ये मिल्क सॉलिड और प्रोटीन पे इनको पेड अप किया जाता है, और हमारे यहाँ लिटरेज पे होता है, और दे मिल्किंग 2 times. 2 times a day. और कोई TMR नहीं है, 2 times की मिल्किंग है, और तकरीबन 12, मैंने दिन को लाइव वीडियो की है, 12-13 किलोमीटर इसने चल के भी आना होता है. तो मेंटेनेंस भी देख लें, और ग्रेजिंग पे इसने ग्रास खाना है. और how much grain you feed in them? 1.8 tonne. Yeah, no, on average a cow. 1.8 tonne per cow. In lactation. For the whole lactation. Yeah, पूरी lactation में 1.8 टन ये इनको ग्रेन्स खिलाते हैं, और वो भी हमारी तरह वंडा नहीं है पूरी ऑर्गेनाइज, बस एक जो इनको चीपेस्ट मिलता है. तो 8,500 लीटर ये लेते हैं, और फैट कंटेंट इसमें वे हाई है. वो मैंने जायल्स की डॉटर्स का किया है, वो आपको पता चल जाएगा. और बॉटम लाइन इसकी जो आपके व्यूज़ हैं बेसिकली कि 8,500 एक नहायत एवरेज फीड पे, 2 टाइम मिल्किंग पे. मेरा ख्याल आज तो बाद प्रोडक्शन की गल नहीं करनी आस्ट्रेलियन एनिमल, तो इन्होंने कोई होर गल पूछ लो. जे किसी को फिर भी शक है तो HRM ते आप भी देख आए हो मिल्किंग एनिमल, तो किसी होर नूं भी भेज दो जिन्होंने शक है. और कोई सवाल कर लो. प्रोडक्शन की कोई डिबेट नहीं. प्रोडक्शन पूरी होलस्टेन दुनिया के बराबर है. ये भी 12,000 तो 16,000 लीटर है, बाकी भी. और कोई क्वेश्चन करना कर लो. But we still produce about 600 kilograms of solids per lactation. Yeah. Which is a higher fat and protein percentage. So 600 किलोग्राम में मिल्क सॉलिड प्रोड्यूस कर दें पर लैक्टेशन. ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ Brian, what do you think that if these cattle they are brought to Pakistan, and we are offering them GMR and this very intensive type of farming,
we are offering them grains, we are offering them a very balanced TMR. So what could be expected from farmers in Pakistan? 10 to 11,000 litres. They do in the TMR systems in Australia. We're getting more. So, yeah, they can do that over 10,000 litres. And can I say, I mean, in China we've had the same situation. A lot of the Australian heifers, many thousands and thousands and thousands of Australian heifers have gone to China. I've spent the last 5 years travelling to and from China pre-COVID, and I've seen animals in Australia that are producing around what Bryan does here, about 8,500 litres, easily do up their 12,000 plus litres in China in the TMR system. Their feed costs are very high in China. They import alfalfa from California, oaten hay from Australia, so their costs are very high. But even in, talking with Hass in HRM Dairy, Australian animals from herds like Bryan's, in fact some of the Emu Bank's animals are milking in HRM. I think that gives a good example in a herd like HRM, how those animals could be expected to produce. We've got such a diverse industry in Australia, from low input to high input. But as Bryan said, the average Australian Holstein cow, we're generally looking around about, for profitability, greatest profitability, about 8,500 litres of milk in a lactation, but capable of much producing. And this herd particularly, because this herd has been using some of the best genetics in the world. It's using Australian bulls, American bulls, European bulls. And what I was really pleased to see earlier, because it's a few years since I've been to this herd, but to see a bull like Giles that we've got in our team that were some amongst Bryan's top heifers in that year. So it's quite diverse. And the other thing with, I guess, I guess you would understand this, that we don't look at average production of daughters of bulls. What we look at, you're a bit close. What we look at is the genetic merit of the bulls, because that takes out all the environmental differences. So it takes out the different feeding systems, from low input to a higher input like moderate, say like Bryan, or even higher input. So genetics, when we look at bulls, we much prefer looking at the genetic merit of the animals and do a comparison that way than looking at average litres in the lactation. So 8, 10, 12,000 litres. We don't really take a lot of emphasis on that. So, Dr. Sahab, आपको आवाज़ आई है? जी, अगर मैं इसकी समरी कर दूं तो ब्राइन और रॉब की ये बात है कि ये 8 से 8,500 जो लीटरेज ले रहे हैं, ये इससे कई ज़्यादा लीटर ले सकते हैं, पर इनके लिए ये रेलेवेंट नहीं है. और आई थिंक इस टॉपिक को अब ये रेलेवेंट है ही नहीं है. हॉल्स्टेन पूरी दुनिया में दूध देती है. मेरा और आपका जो मेरा ख्याल है व्यूज़ के साथ आपको भी कन्विंस पहले करना पड़ा है कि तुसी भी पहले दिन नहीं होए कि ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਹਾਉ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਾਟ ਮੋਰ ਹੈ. ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦਾ. ਬਾਕੀ ਐਨੀਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ. HRM ਤੇ ਬਰਾਇਨ ਡਿਕਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਉਜ਼ ਹਨ 9649 9676 9587. ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ. ਇਫ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਹਾਊ with that sort of milk, why you have bred cows like this? Why not models like North America or Europe? The North American cows are too tall and frail for us to walk the kilometres. They can't walk like the 10 kilometres a day. So that's why we have a lower stature animal and is more strength through the chest and ribs. So that's why we try and have a smaller stature animal and a stronger animal, because they got to stand in rain that's sometimes only 6 and 8 degrees in hail. They don't live in a shed, unfortunately. They have to eat grass and walk. है तुसी हुण आप कर दो ट्रांसलेशन के की कह रहे सी ब्राइन. बात वही पे खत्म होती है जनाब कि स्ट्रॉन्गर काउ, ठीक है ना जी, तो जितनी स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं इनका बेसिकली इशू ये है कि यहाँ पर ग्रेजिंग पे बिजनेस को लेके चल रहे हैं और इनका गुजारा नहीं होता किसी ऐसी गाय से जो सिर्फ पार्लर पे गए और आके शेड पे
आपको एक ऐसी गाय चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेजिंग पे जाए, ठीक है, तो डिस्टेंस भी कवर करे, डिस्टेंस कवर करके वापस भी आ जाए, हेल्दी भी रहे और कम से कम 8,500 लीटर प्रोड्यूस भी कर दे। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਨ ਇਹ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਗਾਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਾਂਝ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਰੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਔਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਾ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੌਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ? Yes, okay. I have one more question. That at the moment in Australia, your production level is about 8,500 liters. For example, I'm having like 10 or 15 calls from Australia, and I'm feeding them at very good TMR. The production yield, it jumps from 8,500 liters to 12,000 liters. So what will be the difference in the breeding efficiency if their breeding efficiency at 8,500 liters and compared to their breeding efficiency at 12,000 liters? You want to answer that? So you mean about feed efficiency? So he said he's because he's a consultant. Yes. One of his farms had Australian heifers, so he's got a TMR for them. Now they're producing around about 12,000 liters heifers. He's saying compared to American, what do you think their fertility will like? Oh, the fertility. Yeah, if they keep on using Australian genetics? Well, I would imagine the fertility will improve over time, but the reality is, I mean, when you look at when you're really pushing cows to the real maximum, fertility is one of the things that do suffer. But in the Holstein breed and in the Australian Holstein, we were talking about earlier in the day, the amount of improvement we've made through genomics in daughter fertility is tremendous. So we've made really big inroads into daughter fertility through the genomic selection. And the Holsteins in the past had a bit of a fertility type issue. There's still some that do, but overall now we've made great inroads in that. There's one other thing. Sorry, Brian, you go ahead. I've got a chart in the office where we actually mapped the last 10 years, and I was 2% below average on fertility 10 years ago, and now I'm 8% above, or 108. So I've actually gained 10 points on fertility in the last 10 years. And that's through genomic selection? Just genomics and picking bulls that are high. In the US, like, I don't like to use a bull that's under 1 for DPR in America, and I try not to use bulls in Australia under 105, 106 for daughter fertility. That's just a focus I have now to try and fix it. So basically इसकी समरी ये है डॉक्टर साहब कि जब आप इतनी प्रोडक्शन लेते हैं, ये तो साफ ज़ाहिर है अगर हम कहेंगे कि डॉटर फर्टिलिटी इतनी प्रोडक्शन के साथ मुतासर नहीं होगी तो होगी, मगर कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि आपने बीपीआई का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें डॉटर फर्टिलिटी पे काफ़ी एम्फेसिस है कंपैरेटिवली बाकी। और इनको क्योंकि चाहिए होता है, हमारी तरह इनका कोई बंदा तो ऊपर हर टाइम खड़ा नहीं होता, तो उनको ये बड़ा ज़रूरी है इनके लिए कि ये डॉटर फर्टिलिटी पे वर्क करें। और हमारे पास अब ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स है, अगर आप उसको मेंटेन रखना चाहते हैं या बैलेंस आउट रखना चाहते हैं तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका, यू वांट आस्क रॉब और ब्रायन, और यू डन? I'm done. These are two basic things, and you have made it very clear. It's pretty clear. Okay, ये रॉब ने कुछ कहना है जरा? Yeah, just one last thing I want to comment about just Australian genetics and how we can perform this. In my time in this industry, which is a long time now, there's about 3 types of genetics. You've got a New Zealand type pasture-based genetics, purely, and they're one of the lowest cost producers of production in the world. They export a lot of, in fact, they're the biggest exporter of dairy products in the world, basically on grazing. So, and then you've got the North American higher input genetics. In the Australian system, we're somewhere in the middle. So we've infused into our breeding program a lot of North American genetics. We've picked out the best that are performed under our system. So that is why under our system, when you put more feed in, our animals will produce 12,000 plus litres in a
TMR type system because we've got that infusion of the North American genetics for our breeding program. But equally, in some of our other breeds like Jerseys, we've got an infusion of New Zealand blood in our program because the New Zealanders have had some very good Jersey genetics. And just the last point I'd make, just on the average production of the that you quoted about 6,000 litres of milk. I've been to seminars where some of Australian academics have talked about that you know the Australian cow will produce 6,500 litres of milk. What they don't qualify it is it Holstein, is it Jersey, is it artificial bred cows or non-artificial bred cows. So the average production of the Australian Holstein, registered Holstein population is about 8,400 litres of milk. But as Bryan said, he's round about that average. That's profitable for him. But other herds we'll visit this week. A chairman of Genetics Australia is on the other side of Melbourne. His herd is around about 8,500 to 9,500 litres of milk. Has a number of cows over 10,000 litres, but he says exactly the same thing. That the profitability for him is around, and that can vary from year to year a little bit, depending on the cost of feed, how much rainfall we've got. It does fluctuate quite a bit. We don't have consistent years. It can fluctuate, and we have to manage accordingly. सो डॉक्टर साहब आपके व्यूज़ के लिए अगर मैं थोड़ा उर्दू या पंजाबी में मिक्स करके बता दूं तो रॉब ने कहा कि ये समवट न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल के मिडल में है, मगर इनकी काउज में पोटेंशियल है, इफ़ यू पुश देम ये आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपके हर्ड पे देगी. स्ट्रॉन्गर, ओपन, वाइड. अब मैंने जाइल्स की डॉटर्स की वीडियो आपको भेजनी है. 5 हैं ब्राइन डिक्सन के पास और हर्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी है. अब जेनेटिक्स की अवेलेबिलिटी सारी है हमारी कंट्री में इंशाल्लाह. तो हम भी ओवरऑल अगर हम अपनी साइड से निकल के देखें तो अब ये इट्स ओवरऑल गुड न्यूज़ आपके व्यूअर्स के लिए और पाकिस्तानी फार्मर्स के लिए कि अब उनके पास चॉइस है इसको डिलीवर करने की. ठीक है, बैटरी भी लो है, पर अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है इसके रिलेटेड, मैंने कुछ देखा है तो मैं कर सकता हूँ. और ब्रायन डिक्सन ने कहा है कि अबव एवरेज फर्टिलिटी है. अब इनकी ऑस्ट्रेलियन एवरेज की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बहुत अबव होगी. तो मुझसे कोई करना है, आपने तो कोई सवाल पूछना, मैं पंजाबी तो जवाब देना है तो मैं तो दे देना. बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹੀਦੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭੁਆਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਰਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਲੀਟ ਹਰਡ ਹੈ. ਤਾਂ ਲੀਟ ਹਰਡ ਦੀ ਲੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਰਡ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਵਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ. HRM ਔਰ HRM ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਲੀਟ ਹਰਡ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਰਡੀਨਰੀ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹਿਊਜ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ बिकॉज अमाउंट ऑफ कैटल ये प्रोड्यूस करती है. और एक क्वेश्चन वैसे मैं छड़ के जा रहा तुहाडे वास्ते कि तुसी ये पुछो ना फार्मर्स कोलों कि चाइना अमरीका तो क्यों नहीं हैफर लैंदा. ये फिर मैनू अगली वीडियो जवाब दे दिओ. अल्लाह ने के बाद थैंक यू.